Good evening, everyone. Warm welcome to Testbook Regulatory Bodies YouTube channel by. So today in this particular session, we will be discussing the finance current affairs for 7th as well as 8th of October, and I'm pretty sure we are going to enjoy the discussion. So guys, याद रखिएगा 11th of October तक के current affairs they are really very important for your upcoming RBI Grade B examination जो कि 18th October को scheduled है. So if you are preparing for that exam, you have to for sure attend at least करंट अफेयर्स टिल 11th ऑफ अक्टूबर. ठीक है जी. तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू क्विकली कॉपी द लिंक ऑफ दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स they know that the session is live and they can join us in this particular session. I hope my voice is clear, audio and video everything is clear, we are good to go. एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए so that we can begin without any further delay. आज का जो हमारा सेशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं. 2 अपडेट्स मेरे पास आरबीआई रिलेटेड है, 2 अपडेट सेबी रिलेटेड है और उसके अलावा एक अपडेट जनरल फाइनेंस रिलेटेड है. और उसी जनरल फाइनेंस रिलेटेड अपडेट के साथ आज के सेशन को हम शुरू करेंगे. तो चलिए ज़रा बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को. तो लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस आप प्लीज़ पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी टेकिंग ऑल योर डाउट्स in the end of this session related to your RBI Grade B और SEBI Grade A examination जो कि अब जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. ठीक है जी. याद रखना SEBI Grade A examination में भी फाइनेंस करंट अफेयर्स आर गोइंग टू प्ले अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड SEBI Grade A के लिए we will be covering the SEBI circulars as well. I will start the sessions on SEBI circulars very soon so that I can help you to prepare for SEBI circulars as well. अगर आप सोच रहे हैं कि would you be preparing for SEBI exam or not, from my side I'm all set, I'm all ready. So it's your choice, it's your will. If you think that you can do it, then I'm there to help you guys so that I can help you not only with finance current affairs but also with the SEBI related updates, SEBI circulars, SEBI notifications, so that you can answer all the questions in the examination itself. चलो सो बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहते हैं सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज. द फर्स्ट न्यूज एज आई सेड मेरे पास एक न्यूज है जो कि जनरल फाइनेंस न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू एनपीसीआई. सो एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. What is this? Sir, NPCI क्या है? अगर हमसे कोई पूछे how you define the word NPCI, then my answer to this particular question would be, sir, NPCI is an umbrella organization for retail payments in India, which means all the retail payments which are happening in the country. The umbrella organization which is looking after these retail payments is none other than NPCI. NPCI was set up with RBI as well as IBA, that is Indian Bank Association guidance under the Payment and Settlement System Act 2007 with its headquarters in Mumbai, and its current managing director as well as CEO is Dilip Asbe. If I'm not wrong, NPCI was established back in 2008. ठीक है. अब NPCI ही है which is responsible for UPI. NPCI ही है which has developed IMPS. NPCI is looking forward or looking after the National Automated Clearinghouse. NPCI ही है which is handling the Aadhaar enabled payment system and many other retail payment platforms or services which are available. अब इसमें क्या है कि सर NPCI is providing these services with the help of different subsidiaries, and right now we have 3 subsidiaries of NPCI. The first subsidiary of NPCI is the one which is operating at the international level. We call it as NPCI International Payments Limited. NPCI International Payments Limited. The other one we have is NPCI Bharat Bill Pay Limited. Other one we have is NPCI Bharat Bill Pay Limited. And the third one we have is NPCI Beam Services Limited. NPCI Beam Services Limited. And recently NPCI has launched a new subsidiary. NPCI has launched a new subsidiary. Then my answer to this particular question is new subsidiary
which has been launched. It stands for NPCI Tech Solution Limited, NPCI Tech Solution Limited. तो आज हम इसी नई जो सब्सिडरी बनाई गई है by NPCI, we will be talking about it, we will be checking out the nitty-gritties of the same. So NPCI launched a new technology subsidiary. The name is NPCI Tech Solutions Limited, which was announced at a Global FinTech Fest 2025. ये जो Global FinTech Fest है 2025, it was organized in Mumbai. If I'm not wrong, it was organized in Mumbai, or Mumbai में भी ना, what is the name of that complex where this event was organized? I guess it was related to Geo. मुझे उस it was Geo World Convention Center. So in Geo World Convention Center, this particular Global FinTech Fest was organized, where PayPal has launched its PayPal Global. याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी पढ़ाया था. So PayPal Global has also been launched during the same Global FinTech Fest, and PayPal Global has tied up, first tie-up has been done with UPI for making the payments. So what are the objectives behind this particular initiative which has been done by NPCI? Sir, a dedicated hub to derive fintech related research and development. प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है सर? आपके दिमाग में एक आइडिया है. when you practically develop a sample of that idea, when you practically develop a model which is implementing that idea, we call it as prototype. For example, अगर किसी ने कहा कि sir I can make an engine which can run on water, then they will say कि ठीक है sir, आप एक engine develop कीजिए. You develop an engine, so that engine which will be developed, it will be a sample, it will be a prototype. So prototyping, experimentation, as well as breakthrough payment innovations, and to build scalable payment solutions and interoperability, including for UPI as well as RuPay. तो क्या है सर? Sir, NTSL was set up with a sole motive कि, as we all know, digital payment world is expanding exponentially, and in order to keep the pace with it, NPCI has decided to set up a subsidiary, a separate subsidiary, which will be looking after only and only the tech solutions, as the name suggests. It will be a hub to drive fintech related research and development, developing the prototype, experiments, as well as breakthrough payment innovations will be done over there. Target sector will be, as the name suggests, a fintech will be the target sector, where the emphasis will be made on payment innovations, cross-border interoperability, prototyping, as well as R&D. Now, this is very important about the capital. The authorized capital, the authorized capital of this particular organization is going to be 10 lakh rupees. Authorized capital का मतलब क्या होता है जिसको नहीं पता? Authorized capital basically means the maximum capital which can be raised by a company in its entire lifetime, but this doesn't mean कि इसकी maximum capital 10 लाख ही रहेगी, नहीं. So this capital can be revised over the period of time. So authorized capital is 10 lakh rupees, and the paid up capital with which the business is going to start, the operations are going to start, that is going to be 5 lakh rupees. Headquarter will be in Mumbai itself, as per the Ministry of Corporate Affairs website. It is stated that its headquarter will be in Mumbai. Where NSTL fits in NPCI group, so NTSL becomes the fourth subsidiary of NPCI. As I just said, NPCI Beam Services Limited is the first one. Second one is NPCI International Payment Limited. Third one is NPCI Bharat Bill Pay Limited. And the fourth one we have is NPCI Tech Solutions Limited. What is NPCI? मैं already आपको बता चुका हूँ. There's no need to waste time. Why this is important? अब ये क्यों important है? पहला, strategic rationale. NPCI has been engine. NPCI जो है, it has been engine. NPCI has been engine behind UPI, RuPay, Beam, Bharat Bill Payment System, as well as other payment rails. So establishing a separate tech specialist subsidiary signals a move to institutionalize continuous R&D and rapid prototyping within the NPCI group, so innovations can be incubated and scaled independently while preserving the core operational stability of main NPCI platform. So simple as it. NPCI ने
टेक्नोलॉजी रिलेटेड पहले ही बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स किए हैं. अब उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव कम अप विद अ डेडिकेटेड organization, the dedicated authority which will be responsible day and night for the same. What NTSL will do, as I have already discussed, R&D, interoperability work, support scalability, resilience, as well as security experiments related to the payment gate, related to the digital payments. Operational and governance notes. NTSL is a separate corporate legal entity, very important. कि सर ये एक separate corporate legal entity है which has been incorporated under MCA, which has been incorporated under MCA. The modest authorized paid up capital indicates a focused tech R&D vehicle, not a large balance sheet bank, while NPCI backing gives its institutional scale for projects. समझ आई ये बात कि सर ये जो कंपनी है इट विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी और इसकी हमने कैपिटल भी बहुत बड़ी रही रखी है और कैपिटल बहुत बड़ी ना रखने के पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है कि सर यहाँ पे हम कोई बैंक या कोई प्रैक्टिकल पब्लिक सर्वेंट को सेटअप नहीं कर रहे विच विल बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक. रादर दिस ऑर्गेनाइजेशन is being set up to act or to play its important role back end where it will be developing the technologies, it will be conducting the research and development operations, as well as it will be involved in developing the prototypes so that the innovations or the digital transactions or the digital payment platforms of the country can be taken to the next height. Link with NPCI International. So NPCI International arm NIPL is already working to extend UPI RuPay acceptance across Asia, Africa, Middle East, Europe. NTSL will likely support such initiatives from technology and interoperability angle. तो भैया अब जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगी NPCI के किसी भी इनिशिएटिव में that will be given by none other than NTSL. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया. Now let's try to solve a question. आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूँ. Sir, there are many questions in the mocks where the data is wrong and I face 2-3 questions like this in every mock. Please help me, sir. I am not able to cross 60-61 overall marks. Like today there was one question in the test 11 where it was mentioned Maharashtra topped the fiscal index, but it is Odisha actually. Okay, so I guess you should write this query on the support. I hope you have that access and the team will be looking forward to it. Don't worry. ठीक है जी. Coming to the question. NTSL was announced at the Global FinTech Fest 2025, 7 to 9th of October. True. NTSL commenced operations with authorized capital of 10 lakhs, paid up capital of 5 lakhs. True. NTSL registered office is located in Mumbai. NTSL become the fourth subsidiary of NPCI. That is true. The initial board of directors will include Ajay Kumar Chaudhary, Dilip Pratap Asbe, as well as K. Vishwanath and Nitin Mishra. And Nitin Mishra, that is also correct. So answer is going to be B option. जिसको लग रहा है कि फिफ्थ स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ाई, मैंने यहाँ लिख दी थी, पढ़ाई नहीं क्योंकि इसके चांसेस कम है, बट मैंने उसको क्वेश्चन में इंक्लूड इसलिए किया सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ गया देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट. ठीक है जी, क्लियर हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन. अगली जो न्यूज है दैट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट न्यूज. आपको याद होगा, आई वुड start my discussion for the next news in this manner. We all know that according to RBI, India's GDP is now expected to grow by 6.8%, which was earlier 6.5%. According to IMF, we are expecting that Indian economy will grow by 6.4%. According to Fitch, 6.9%. According to OECD, we are expecting 6.7%. According to ADB, it is 6.5%. And according to World Bank, as per the previous data, it was 6.3%. It was 6.3%. But now, World Bank has revised its outlook, economic outlook for the South Asian countries, and I have a news on that itself. ठीक है जी, start करें. Next,
So the biannual South Asia update has been given by the World Bank. We call it as World Bank South Asia update. Assesses the economic outlook, growth prospectus, trade labor market, technology dynamics in the South Asian countries. So October 2025 edition is titled as, what is the title of World Bank's 2020 October 2025 edition? It says Jobs, AI and Trade, which focuses on artificial intelligence as well as global trade disruptions. According to this particular organization, what is the GDP forecast? So the GDP forecast for the current financial year is 6.5%, which has been increased from 6.3 to 6.5%. But for the upcoming financial year, this forecast has cut down from 6.5 to 6.3%. ठीक है जी, remember this. But in case of ADB, both the years it is 6.5%. अगर आप चाहें, you can ignore this data, क्योंकि कितनों का याद करोगे, 2025-26 का याद कर लो, that is more than sufficient. So there is an upward revision for the financial year which reflects strong private consumption, enhanced agriculture output, rising rural wages, but downward is because of negative impact of US tariffs on the Indian exports, which will impact the GDP growth rate for the upcoming financial year. What are the key drivers of growth according to the World Bank report? So the key drivers of Indian growth is robust domestic consumption, agriculture sector revival, rural demand recovery, as well as continued service growth is supporting the Indian economy to grow at this particular rate. ठीक है जी. Trade and global impact. US has imposed 50% tariff on 3/4 of the Indian exports to US. Nearly 20% of India's total goods exports. Nearly 20% of the India's total goods export, approximately 2% of India's GDP, were directed to US in 2024. So tariff shock is expected to drag the growth in both India as well as South Asian region during the 2026. And in India, we are expecting that Indian economy will grow at a rate of just 6.3%, which was earlier estimated as at a rate of 6.5%. Moving on to the last point. What does the last point say? Just give me a second. Okay. So the last point says India is expected to surpass China to become the largest source of global energy demand by 2050. This is very important. So according to this particular report, India is expected to surpass China and India will become the largest source of global energy demand by 2050, which is something which you need to remember, which means currently the largest energy demand is by China and India will surpass China to become the largest energy demanding globally. If I talk about the entire South Asian region, so for the entire South Asian region, the current year or calendar year 2025, it is 6.6%. For calendar year 2026, it is going to be 5.8%. India remains the region's anchor of growth, contributing over 75% of the South Asia's GDP expansion. तो ये GDP expansion जो South Asian countries में हो रही है, that is majorly because of India. और South Asia में है भी कौन? कहने को South Asia, it is only MBBS Spain. MBBS Spain का मतलब यहाँ पे Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, India, Nepal. M stands for Maldives or Mauritius. Give me the answer in the comment section. Chalo. Let's try to solve the question. World Bank has raised India's GDP growth forecast for financial year 2025-26 to 6.5%, a 20 basis point increase from its previous estimate. Absolutely correct. GDP forecast for the next year has been revised downwards from 6.5, it has reduced to 6.3% due to decrease in exports to the US states or United States. The report projects South Asia's growth at 6.6% for the current calendar year, next calendar year 5.8%. That is true. India's export to the US in 2024 accounted nearly 20% of the total goods exported, which is approximately 2% of India's GDP. That is true. According to the report, India is expected to surpass China to become single largest source of energy demand by 2050. That is correct. So keeping that in mind, answer to this particular question is going to be D option. 1, 3, 4, 5 are correct. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा जी.
आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम बात करें, सो द साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूड एमबीबीएस पेन, मैंने तो हमेशा से ऐसे ही याद किया फ्रॉम द डेज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तब से मैंने इसको ऐसे ही याद किया, दैट इज एमबीबीएस पेन. So it includes Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan. Along with that, the one more nation which I was asking you all, that is from alphabet M. कोई कह रहा है Maldives, कोई कह रहा है Mauritius. आंसर मुझे अभी भी नहीं मिला, but I was expecting that you all will give me the correct answer. ये तो आसान था. It is Maldives. It's not Mauritius, guys. It's Maldives. ठीक है जी, क्लियर हो गया. Kirti, see, if we talk about that due to decrease in exports, the demand decreases. Obviously, if the demand decreases, we will expect the prices to fall down. See, क्या हो रहा है कि ये जो डिक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ इन द टैरिफ, वो इंक्रीज जो है दैट हैज बीन डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जो एक्सपोर्टर्स थे, दे वर ऑलरेडी अवेयर this is going to happen. The buyers, they were already aware this is going to happen. तो यहाँ पे drastic demand will not fall down, keeping the supply constant. With the decrease in demand, supply has also reduced, seeking the current scenario. तो उसमें कहीं ना कहीं जो आप impact सोच रहे हैं वो होगा, but उस लेवल पे नहीं होगा कि it will be readily visible to you and me. होगा, but उस लेवल पे नहीं होगा which will be readily visible to you and me. It will be visible to the importers एक हद तक कि we are ready to purchase the products. After the tariff, we are still there to purchase, but we will be purchasing at given amount. So, जो already you have supplied, which you have already produced, you will be selling at that price. But in near future, if you feel that on that particular price value you are not earning the profits, you may discontinue your supply or you may reduce your supply accordingly. ठीक है जी, क्लियर हो गया. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला जो पॉइंट है, अगली जो न्यूज है, दैट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार है. What is that news all about? So that is related to RBI, Bharat Connect as well as FX Retail. पहले इस पॉइंट को मैं आपको समझाने से पहले ना, let's take an example to understand this particular news. फिर इसे आगे बढ़ने में फायदा होगा, then only you will enjoy it. Otherwise, it is wastage of time. First of all, guys, you tell me what is foreign exchange retail. First of all, you tell me what is foreign exchange retail. Any idea? Any idea? Foreign exchange retail, FX retail, इसका मतलब क्या होता? बताइए जरा. अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू. ऑब्वियसली मैं तो आपको एक एग्जांपल भी लूंगा, पूरी रियल लाइफ एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा. सो प्लीज पे अटेंशन गाइज, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस FX रिटेल प्लेटफॉर्म. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, FX रिटेल प्लेटफॉर्म, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन this particular platform. What will be the answer to this particular question? Please pay attention. FX retail. FX is foreign exchange. Retail means the trade of foreign exchange done by the retailers, by the individuals, by the small buyers, by the small sellers. They are involved in this particular trade. We call it as retail. So foreign exchange retail platform is an electronic order driven dealing system which is developed by Clear Corp Dealing System India Limited, which is a wholly owned subsidiary of Clearing Corporation of India, and इसे लॉन्च किया गया था 2019 में under the guidance of RBI with a goal to democratize access to the foreign exchange market for the retail customers as well, like individuals, you and me, small and medium enterprises as well as corporates. Before launching this FX retail, which is developed by I would say the subsidiary of Clearing Corporation of India, which is a subsidiary of Clearing Corporation of India, before this launch, small participants, they had very limited access to the fair and transparent forex pricing in the market. अब आज की डेट में, if you think, I don't know whether you know this or not, if an individual wants to buy a foreign currency, what this individual will do? So this individual will go to the bank,
और बैंक को कहेगा बैंक आई वांट टू बाय यूएस डॉलर्स. So bank will come up with the answer that $1 is equals to 85 rupees. The moment this individual hears the price, he will say कि यार मैंने Google किया था, Google पे it was showing the price is 84. तो बैंक कहेगा कि सर 84 प्राइस है, हमने जो परचेज किया है, हम यहाँ पर डॉलर होल्ड करके बैठे हैं, हम आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क लेंगे. तो उस केस में दिस इज ऑब्वियस दैट वी विल बी अर्निंग कमीशन फ्रॉम यू. We will be earning the commission from you. And bank can easily manipulate the price as per its current scenarios, as per its requirements, as per the demand and supply in the market. तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हम कहते थे they had a very limited access to fair and transparent, I repeat, fair and transparent forex pricing. ठीक, तो फिर इसी चीज को देखते हुए एफएक्स रिटेल को सेटअप किया गया टू इंश्योर रिटेल यूजर्स दे रिसीव रियल टाइम मार्केट बेस्ड फॉरेक्स रेट्स इंस्टेड ऑफ बैंक मार्क्ड अप रेट्स. सो टू प्रोवाइड equal and direct access to the same pricing mechanism used by the large participants. तो इससे टारगेट क्या है सर? इसका टारगेट है ट्रांसपेरेंसी plus fairness. That means you will get the same platform or you will get the same price as that of the large buyers. Accessibility, you will get the accessibility to trade in the foreign exchange, as well as it will be cost efficient. Cost efficient means it will eliminate the hidden spreads or the commissions which are involved with the help of these banks and all which were involved earlier. ठीक है, तो अब इसमें ऑपरेटर कौन है सर? क्लियरिंग कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड is the operator of this FX retail. Parent company is Clearing Corporation of India. Regulator is obviously RBI, and it was launched back in 2019. It was launched back in 2019. अब इसके functions क्या हैं? Sir, it is an order matching anonymous web-based platform. Order matching anonymous web-based platform मतलब एक individual आया, उस individual ने क्या किया? अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊं, तो how it works. Suppose there is a individual, he is a student, है ना? He is in need of $1,000. He is in need of $1,000 for paying the university fees abroad. So what will this student do? So first of all, this student will register himself on foreign exchange retail. You will register yourself on the foreign exchange retail via let's say SBI banking. So you have register yourself on this retail via bank, and this time we have a bank, that is SBI bank. So you will view, once you have registered, then you will view the current price. The current price is US dollar INR. US dollar INR rate is 83.20. इसका मतलब 83.20 रुपीस का $1 अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे. तो वहां पे आपने एक ऑर्डर प्लेस किया. देयर विल बी ऑप्शन प्लेस ऑर्डर. यू विल प्लेस ऑर्डर टू बाय $1,000 क्योंकि आपको अपनी फीस भरनी है. यू नीड $1,000. तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया उसमें आप अपना एक बिड भी लगा सकते हैं. बिड का मतलब कि सर आई एम प्लेसिंग दी ऑर्डर एट 83.10. तो जैसे प्राइस 83.10 होगा, अगर होगा, तो योर ऑर्डर विल बी आई वुड से मैच्ड, एंड द मोमेंट योर ऑर्डर इज मैच्ड योर ट्रांजेक्शन विल बी डन. अब इसमें जब ट्रांजेक्शन होगी तो पॉइंट है कि सर सेटलमेंट कैसे होगा, हाउ द सेटलमेंट इज गोइंग टू बी डन. सो इन केस ऑफ सेटलमेंट वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. यू हैव टू चूज. सेटलमेंट विल बी कैश. कैश का मतलब है इमीडिएट सेटलमेंट. Immediate settlement मतलब T+0. You will pay the funds, you will get the dollars. Second is TOM, that stands for settlement will be tomorrow, T+1. अगर आज आपका bid final हुआ, आज अगर आपका trade हुआ, तो tomorrow इसका settlement होगा. Then we have spot. Spot is what? Sir, it is standard settlement which involves 2 days, T+2. And the third one we have is forward. Forward is basically a date which is pre-decided, which is obviously greater than 2 days. अगर 2 दिन से ज्यादा दिन है जिसपे सेटलमेंट होगी, then it will be included in the category of forward trade or forward settlement mode. I hope the point is clear. Benefits क्या है सर? It will give you fair pricing, real time access, ease of use, reduced cost, transparency, as well as risk free settlement can be done by the customers like you and me. Clear होगी बात? स्टोरी समझ आई?
क्लियर हुई ये बात? स्टोरी यहां तक समझ आई? ठीक है, अब स्टोरी दूसरी चलते हैं। दूसरी स्टोरी क्या है सर? दूसरा है एक टर्म जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था यहाँ पे, विच इज रिटन ऑन द स्क्रीन, दैट इज भारत कनेक्ट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर व्हाट इज दिस भारत कनेक्ट? दूसरा पॉइंट आता है कि व्हाट इज दिस भारत कनेक्ट? सो द मोमेंट वी टॉक अबाउट दिस टर्म भारत कनेक्ट, व्हाट डज इट बेसिकली मीन्स? सर अगर मैं बात करूं भारत कनेक्ट की, ये एक न्यू डिजिटल एक्सेस चैनल है। इट्स अ न्यू डिजिटल एक्सेस channel built on the top of the Bharat bill payment system, and it is obviously an interoperable payment infrastructure which is operated by NPCI Bharat Bill Pay Limited, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। So it is designed to act as a secure, familiar, standardized entry point for every retail users to access RBI's foreign exchange retail platform. तो इसमें होगा क्या? What will be the process? So process ये है कि you have already registered at BPS, so how it connects the retail user, it will log into। अब कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब ये जो इंडिविजुअल है, this individual will get itself log in into the Bharat bill payment system, Bharat bill payment system through app or maybe through portal, or you visit an agent outlet that supports the Bharat Connect services। तो जैसे ही आपने लॉग इन किया, then you will open up the Bharat Connect Forex FX services। The moment you click on the Bharat Connect FX services, you have to complete your KYC, you have to provide your permanent account number, then only you will be allowed to get into the operation। So Bharat Connect interfaces with the RBI FX retail portal। तो ये जो भारत कनेक्ट है, it has a connection with the Bharat retail portal, और उस रिटेल पोर्टल पे एज वी हैव डिस्कस उस तरह से ट्रांजेक्शन होंगी। बट ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज हैज बीन बेसिकली सेटअप, दिस ब्रिज हैज बीन बेसिकली सेटअप बाय भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एंड वी कॉल दिस ब्रिज एज भारत कनेक्ट, जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, विच विल टेक अप योर कंटेंट, विच विल टेक अप योर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी डन। दैट इज अ पॉइंट। ठीक है जी। सो हियर यू विल कम अप विद अ ट्रांजैक्शन बुकिंग, पेमेंट विल बी डन एंड द ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड। मोटी मोटी बात समझ आ गई? मोटी मोटी बात समझ आ गई। अब इसको समझते हैं ये काम कैसे करेगा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च पायलट टू लिंक क्लियर कॉर्प FX retail platform with the Bharat Connect, so retail customers of participating banks can buy US dollars, notes, forex cards, forex card loads. That means you can get your forex card loaded or outward remittance via bank or third party involvement. So this was also launched during the Global FinTech Fest 2025. This launch was announced by none other than T. Ravi Shankar, the RBI Deputy Governor, and he has announced that FX Retail, which is an order-driven web platform for retail USD INR dealing operated by ClearCorp Dealing System, which is a subsidiary of CCIL. Platform was launched back in 2019 and it supports booking in cash, tomorrow, T+2 and forward. I hope it is clear, और forward will be up to 13 months। ये सारी बातें अब मैं समझा चुका हूँ, समझ आ रही होंगी, विजुलाइज कर पा रहे होंगे। भारत कनेक्ट क्या है सर? इट इज अ भारत बिल पेमेंट सिस्टम चैनल विच इज ऑपरेटेड बाय NPCI, used here as a digital on ramp for retail customers to access FX retail services। अब होगा क्या? होगा क्या सर? पायलट बैंक्स हैं इसमें, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, SBI as well as Yes Bank. So customer of these banks are also included in the pilot. Digital channels, customers, they can now register and transact via digital channels of the banks as well as with the help of third party application providers like Cred as well as Mobivic. Transactions are on a value cash basis, that means immediate or same day settlement will be offered, which is a cash oriented transaction. The linkage enables the retail customers to buy US dollar for physical currency notes, for loading their foreign currency cards or prepaid cards, or for outward remittances. These modes will be available via integrated bank, whichsoever is, or the third party channel which is involved. Why RBI did this? So objective is broaden the access to transparent competitive retail forex pricing and widen the reach of FX retail beyond existing internet app, so more individual customers can transact easily via preferred payment or banking applications, that is Bharat Bill Payment System.
RBI has proposed linking FX retail with Bharat Connect in December 2024, and finally it has been now initiated in October 2025. So FX retail, as we have already discussed, what is it? Pilot rollout we have already discussed. तो मुझे लगता है मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस कर ली. इंपॉर्टेंस क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर फॉरेक्स सर्विस, प्राइस डिस्कवरी एंड ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस फुटप्रिंट, पेमेंट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन विल बी डन. इजी था, समझ आया? अगर आप डायरेक्ट न्यूज पढ़ते, मैं लिख के दे सकता हूं, आपको एक अक्षर भी समझ नहीं आना था, इसलिए मैंने पहले आपको पूरी स्टोरी सुना दी, जिसकी मदद से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी क्लियर टू यू. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द पायलट linking ClearCorp FX retail platform with Bharat Connect was launched at the Global Fintech Fest 2025 Geo World Convention Center, Mumbai, and announced by RBI Deputy Governor T. Ravishankar. That is correct. The initial pilot integrates these banks. That is correct. Customer can use CRED as well as MobiVic. In order to perform the transactions. In case of banks, na, बैंक के केस में एक्सिस बैंक था, फेडरल था, मुझे लगता है HDFC नहीं था शायद. आई डोंट थिंक HDFC वाज देयर, है ना? HDFC सोचते हैं, नहीं तो पीछे तो कर ही लेंगे. एक्सिस था, फेडरल था, ICICI था, SBI था, येस बैंक था, लेकिन HDFC नहीं था, तो उसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी. कस्टमर कैन यूज क्रेड एंड मूविंग, दैट इज ट्रू. Foreign exchange retail platform was originally launched in 2019. That is true. Under the pilot project, customers will be able to buy physical currency, notes, cash, remittances, forex card loadings are excluded. नहीं sir, सब कुछ allowed है, सब कुछ allowed है, तीनों की तीनों transactions allowed है. So keeping that in mind, 1, 3 and 4 are correct. Fifth statement is wrong. फिफ्थ रॉन्ग हो गई, सेकंड रॉन्ग हो गई, तो आंसर क्या बनेगा सर? ए ऑप्शन, दैट इज करेक्ट. बढ़िया. चलो जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. सेबी से रिलेटेड ये न्यूज है, और सेबी से ये जो रिलेटेड न्यूज है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस न्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, तभी इसका फायदा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है. इट्स ऑफ नो यूज आई वुड से. तो प्लीज एक बार स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा. आई एक्सप्लेन यू दिस एंटायर स्टोरी अगेन वंस द स्टोरी इज क्लियर. उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है, जो हमारे पास लिखा है वो हम पढ़ लेंगे, एंड इट विल बी क्लियर टू अस. आई एम जस्ट रिमूविंग माई इमेज सो दैट आई कैन यूज द एंटायर स्क्रीन. ठीक है जी. अब ध्यान देना, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सो दैट यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट. I'll take a example, a real life example. Let's say there is an individual, and this individual wants to initiate the investment payment. Let's say this individual name is Madhav, and Madhav is planning to buy mutual funds online. ठीक है? Madhav is planning to buy mutual funds online. अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप वन विल बी investors, they will initiate the payment. So in that particular case, let's say Madhav is a retail investor, and he decided to invest 10,000 rupees in the Axis Blue Chip Fund, which is a mutual fund, through the mutual fund app only of Axis Bank. At the payment stage, I will see a UPI ID. At the payment stage, I will see the UPI ID, and this UPI ID will be of like this: Axis Blue Chip @ first word will be valid, second will be .mf, valid.mf. So the moment you will enter Axis Blue Chip @valid.mf in your UPI in order to make the payment, so you will get this UPI ID. अब आप इस UPI ID को कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप अपना UPI ऐप खोलेंगे, और UPI एप्लीकेशन खोलने के बाद you will paste this ID. The moment you will paste this ID, you will get a green thumbs up icon. और ये जो green thumbs up icon है, it will be inside a triangle.
इनसाइड अ ट्राइंगल, और इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो पेमेंट है दैट इज वेरीफाइड। तो इससे क्या पता चला सर? इट मीन्स द एड्रेस इज वैलिड, इट इज ऑफ म्यूचुअल फंड and it is authenticated, it is actual address, nothing to worry. So this mark means the handle is officially verified by NPCI as well as SEBI. There is no fraud while making the payment to the same. There is no fraud while making the payment to the same. अब मान लो QR कोड वेरिफिकेशन की बात करें, अगर ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं आप, तो इन केस ऑफ QR कोड वेरिफिकेशन, सपोज माधव वॉक्स इनटू द फाइनेंशियल एडवाइजरी ऑफिसर who displays the QR code to collect the payment for the mutual fund investment. The QR code shows the same green triangle thumb logo, same green triangle thumbs up logo, confirming that it is valid and verified. तो जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, the moment you will scan it, you will get that logo, triangle में you will get that thumbs up logo कि हाँ जी सर ये जो आपके पास आया this is correct, आप पेमेंट कर लीजिए। अब दूसरा आता है Step 4, that is double checking via SEBI. So before investing, Madhav wants to be absolutely sure that intermediary is genuine. So what I can do, Madhav can open up Sarthi app. What Madhav can do, so Madhav can open up an application, and the name of that application we all know that, so that is Sarthi app. तो मैं क्या करूँगा सर? मैं Sarthi app को open करूँगा. The moment I will open up the Sarthi app, the Sarthi app, I'll go to the check at the rate valid UPI और अकाउंट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई विल टाइप द UPI ID जो मुझे मिली थी। मैं इस UPI ID को टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद ऐप मुझे कंफर्म करके देगा। ऐप मुझे बताएगा दिस इज एक्सिस म्यूचुअल फंड, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, लिंक्ड अकाउंट इज एक्सिस बैंक लिमिटेड अकाउंट एंड इट इज वेरीफाइड बाय सेबी। ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी। अब मान लो अगर ये फेक हैंडल होता, तो उस केस में कोई ग्रीन वेरिफिकेशन आइकन अपीयर नहीं होगा, या फिर देयर विल बी अ वार्निंग मे पॉप अप ऑन योर UPI ऐप कि भैया प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग द पेमेंट टू द राइट पर्सन। सो दिस इज बेसिकली डन। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, कहानी समझ आ जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। सो व्हाट इज इट? सो 2 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, UPI handles @valid and SEBI check, launched by SEBI in collaboration with NPCI. Exclusive @valid UPI IDs for all the registered investors facing intermediaries. Suffix such as .brk for broker, .mf for mutual fund, and green thumb icon inside a green triangle appear when paying a verified handle. Specially marked QR codes carry the same logo. Major brokers covering greater than 90% of the investors and all the mutual funds, they have adopted this @valid wala part. सेबी चेक का मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन पोर्टल इज अवेलेबल। सेबी वेबसाइट पे या सारथी ऐप पे जाइए, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए, जो भी आपके पास UPI डेटा है या UPI एड्रेस है उसे पेस्ट कीजिए और चेक कर लीजिए। इफ इट इज वेरीफाइड देन इट्स फाइन, इफ इट इज नॉट वेरीफाइड देन डू नॉट मेक द ट्रांजेक्शन और डू नॉट मेक द पेमेंट। दैट इज अ पॉइंट। ठीक है जी, अब इसी पे पूरी स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी आप पढ़ लेना। मुझे लगता है कि ये स्टोरी मुझे पढ़नी चाहिए बिकॉज आई हैव गिवन यू द एंटायर आंसर in this discussion itself. समझ आ गया ना? क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। उससे पहले बस आप ये देख लो, सेबी चेक्स में व्हाट इट वेरीफाइज, बैंक अकाउंट प्लस IFC वेरीफाई होगा। पेमेंट मोड्स UPI, NEFT, RTGS, IMPS, that is SEBI check can be used to verify pay details for these transfer methods. How investor use it? Before making a payment, UPI, NEFT, RTGS, IMPS, the investor enters the pays UPI handle or bank IFSC और अकाउंट नंबर इनटू द सेबी चेक। चेक कर लो, अगर मैच होता है तभी पेमेंट करना, अदरवाइज डोंट मेक द पेमेंट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मुझे लगता है कि इतनी इंफॉर्मेशन के साथ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है दैट इज जस्ट टू गिव यू मोर, आई वुड से, क्लोजनेस टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। वरना जो मैंने आपको बात बताई है दैट इज समथिंग विच इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। SEBI introduced exclusive @valid UPI ID for registered investors facing intermediaries. The handles include suffix
as .brk for brokers and .mf for mutual funds. That is correct. When an investor initiates a UPI payment, @valid handle, a green thumbs up inside a green triangle appears on the payment screen. Specially marked QR with the same logo will also be usable. That is correct. Logo भी वैसा ही होगा, तभी वो usable होगा. SEBI check cannot be used to verify. No sir, it is wrong. SEBI का जो check है, it can be used for UPI address, it can be used for NEFT, RTGS, IMPS. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है अपने इन्वेस्टर की, जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, you can use that information and you can verify your destination of investment. Major brokers covering over 90% of the investors and all the mutual funds, they have already adopted absence of green thumb icon should be treated only as advisory. No sir, अगर green thumb icon नहीं है तो वो advisory नहीं है, कहानी खत्म है, वहां पे आप इन्वेस्ट मत करो. SEBI check is available on the SEBI website as well as on the SEBI Sarthi app, and it allows the verification of @valid UPI ID as well as bank account number, IFSC across UPI, NEFT, RTGS, IMPS. That is true. तो आंसर क्या बनना चाहिए सर? इसका आंसर बनना चाहिए 1 to 5, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन वन. समझ आ गई बात? मजा आया? क्लियर हो गया? दो पॉइंट थे जो कि काफी टफ थे, 2 स्टोरी सुनाई. मुझे लगता है कि उन दोनों स्टोरीज से कहानी क्लियर होगी, समझ आ गया होगा. अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट यू, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिफोर लीविंग. एंड बिफोर वी कंक्लूड, इफ यू हैव एनी डाउट regarding your preparation, any doubt regarding your upcoming examination, please ask, and even you can ask your doubts after this session in the comment section itself. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो प्लीज़ आप पूछ लीजिए. एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, वो आपको भी पता होगा कि सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है. if you're still in a dilemma that whether you should prepare for this exam or not, then I would suggest you do prepare for this exam. काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी वैकेंसीज है यार. 56 इज अ गुड काउंट इन केस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, तो उसे प्रिपेयर करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. एंड उसके लिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ बैच बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं. और आज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे ओनली वी हैव अ सेशन एट 6:30 PM, जहाँ पे एक सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेबी बैच. और सेबी बैच में भी याद रखना, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है. वहाँ पे जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर फाइनेंस करंट अफेयर्स ओनली. और जो सेबी के हम कह सकते हैं कि जो सेबी के सर्कुलर्स हैं जो हमने उतनी डिटेल में नहीं पढ़े अभी तक इन आर आरबीआई एग्जामिनेशन, कीपिंग इन माइंड कि इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है जी, क्लियर है? तो आई गेस दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड. Let's conclude the discussion. लेकिन जाने से पहले a very important information to share with you. Today at 6:30 PM on the same, sorry, today is 9th है ना, कल, आज तो 9th है ना, तो tomorrow at 6:30 PM we will be launching the SEBI Grade A crash course. Don't forget to watch this session so that you can have the insights regarding this particular course. क्या available है, कैसा है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर पहले RBI के लिए कोर्स लिया, अब फिर सेबी के लिए ले, कल को नबार्ड आएगा उसके लिए ले, फिर IRD आएगा उसके लिए ले, फिर कल को RBI ग्रेड ए आएगा उसके लिए भी कोर्स ले, इतना ज़रूरी नहीं है. आप हमारा सुपर पैक ज्वाइन कर सकते हैं. इन सुपर पैक यू विल गेट दी सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट 6 months at just 8799. यूज कोड MADHAV in order to enjoy maximum discount. और इन 6 महीने की इस सब्सक्रिप्शन में you will able to access all the upcoming exam batches in a single subscription model itself. तो इस सेल का जरूर फायदा उठाएं if you have not yet registered to our platform. If you want to join my free masterclass, it is available on our application Monday, Wednesday, Friday at 9 PM, at 5 PM. Do join it, where I'm discussing descriptive questions, even questions on finance, static, as well as I discuss the current affair based questions related to finance. ठीक है जी. So will you cover the news in the next week also?
नॉट डिसाइडेड येट रेखा, बट आई एम थिंकिंग दैट वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि उस वीक की न्यूज आपके एग्जाम में काम नहीं आएंगी. आई विल बी कवरिंग देम after phase 1, but let's decide. I have to discuss with the team, then I'll come back to you. You can see 30th October को we are expecting the final notification, है ना. नोटिफिकेशन के 45 दिन मान लो, तो आप ये समझो कि दिसंबर के 3rd या 4th वीक में अर्लीस्ट आपका फेज 1 हो सकता है. दिसंबर के 3rd या 4th वीक में अर्लीस्ट आपका फेज 1 हो सकता है. सो रिमेंबर दैट इन दिसंबर 3rd और 4th वीक. 3rd इज अर्लीस्ट, 4th वीक में चांसेस काफी ज्यादा. So last year phase 1 was conducted in September, so there was only 2 questions from the budget and economic survey. Can I skip for this year? Kirti, as per the last year analysis, you are correct, but the same pattern will be followed this year as well. ये जरूरी नहीं है, तो उस पैटर्न को ट्रस्ट मत करना, क्योंकि आरबीआई इज ऑलवेज नोन फॉर सरप्राइजेस, तो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देता रहता है. पिछली बार यही सरप्राइज था कि बजट से क्वेश्चन कम आए, इस बार हो सकता है यही सरप्राइज हो कि बजट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच गाइस, विल कैच यू इन द अपकमिंग सेशंस टू गो. बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू.